Fine. So next point what we have is Tn is equal to Sn minus S of n minus 1, where n is greater than equal to 2. It means what? It means I have T1, T2, T3, T4, like that I have say Tn. So Sn will be what? It will be T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus all this term till Tn. So when my n is equal to say 2, I will not going to consider 1. Why? Because Sn, because S1 is T1 only. So I will not going to consider that. When n is equal to 2, so n2 will be T1 plus T2. When n is equal to, when n is equal to 3, so S3 will be T1 plus T2 plus T3, and when n is equal to say 6, so S6 will be T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 plus T6. And if you want to find, say you have term 1, term 2, term 3, term 4, term 5, and say term n. And if you want to find Tn, means T5, if you want to find term 5, so what you'll do? You can find this by adding all this. All this you will going to add. Means T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5. And then you will going to subtract what? T1 plus T2 plus T3 plus T4, and then you will get what? Then you will get T5. How? This will get cancelled with this. 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 So what is this T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5? It is S of 5 minus what is T1, T2, T3, T4? It is S of 4. So that's what is this formula mean. Which formula? The formula is your T of n is equal to S of n minus S of n minus 1. That's what is the formula mean. Hope you are understood it now. If not understood, I will going to explain this again with one example. What example I will take? I will take some AP. Which AP I will take? See, the first term is 1 and the common difference is say 3. 3 plus 1 is 4. 4 plus 3 is 7. 7 plus 3 is 10. 10 plus 3 is 13. 13 plus 3 is 16. I want to find 13. It means what I need to find? T1, T2, T3, T4, T5. I have to find T5. How I will get T5? I will get T5 by S of 5 minus S of 4. Okay, this is how I will going to get T5. What is my T5? What is my S5? S5 is T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5. Okay, and what is my S4? S4 is T1 plus T2 plus T3 plus T4. What is T1? T1 is 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 minus T1 is what? 1 plus 4 plus 7 plus 10 minus 22 is what? 13. So my T5 will be what? My T5 will be 13. Is this 13? Fifth term is 13 or not? See, this is 13. Hope you have understood this. So let's have let's discuss this example. It says that 4 different integer form an increasing AP. It means I have an arithmetic progression T1, T2, T3, T4. How I have this arithmetic progression as increasing AP. When I say increasing AP, what does that mean? That means T1 is less than T2, T2 is less than T3,
Okay, so they are talking about increasing AP. Okay, four terms I have to select. Which four terms I can take? This T1 I will take, say, A minus D. This T2 I will say take A, and this T3 I will take A plus D, and this T4 I will take A plus 2D. Okay, they all are increasing. Fine. And why it is increasing? Why I'm saying that this is increasing? Because T2 minus T1, that is A minus of A minus D, which is plus D. Because of this positive sign, okay, I can say that this is increasing AP. If the common difference, if the sign of common difference is positive, I will call that AP as increasing AP. Correct? Okay, fine. So the next point is one of these number is equal to the sum of the squares of three number. तो वन ऑफ दिस नंबर, तो कितने नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर? T1 T2 T3 T4, इतने नंबर दिख रहे हैं, मतलब ये चार नंबर है। इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो। कौन सा लिया मैंने? समझो मैं A लेता हूं, ये A लिया। दिस A, वन ऑफ दिस नंबर इज A, इज इक्वल टू का मतलब होता है ये साइन, टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर थ्री नंबर, ये और ये हो गया, इनका सबका सम करना है स्क्वायर करने के बाद बाकी के बचे हुए का। ठीक है, तो यहां मैं देख रहा हूं एक चीज, क्या कि ए स्क्वायर, ओके, ए माइनस डी द होल स्क्वायर, ए प्लस डी द होल स्क्वायर प्लस ए प्लस टू डी द होल स्क्वायर, किसी भी हालत में ये ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ए माइनस डी द होल स्क्वायर है। दिस विल गिव यू सम पॉजिटिव नंबर, दिस विल गिव यू सम पॉजिटिव नंबर, दिस विल गिव यू सम पॉजिटिव नंबर, and this can never be equal to A. Why? Because already there is A minus D something, here again A plus D something, and here again A plus 2D the whole square something. So this will never be equal to A. So this approach is wrong. So we have to select another approach. What should be the another approach? This time we will going to consider A plus 2D as one of the number. Okay, so I will going to consider A plus 2D as one of the number, one of these number na. So I will going to choose that one of these number as A plus 2D is equal to, ये is equal to का मतलब होता है ये equal to sign, ठीक है, to the sum of the squares of other three number। तो इसको मैं स्क्वायर कर दूंगा, sum of the squares of other three numbers, ये other three numbers को मैंने स्क्वायर कर दिए। ओके, अब क्या करें? अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। इट विल बी ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर। सो हियर व्हाट आई विल गेट? हियर आई विल गेट 3A स्क्वायर। हाउ? दिस 3A स्क्वायर, A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर is 3A square, and minus 2AD plus 2AD will get cancel and you will get only 2D square। यहां क्या है? यहां A plus 2D है। ओके, आई नीड टू फाइंड द नंबर्स। फाइन, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको, अच्छा, इसमें मुझे क्या समझ में आ रहा है? इसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो D की जो वैल्यू है ना, वो पॉजिटिव ही होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि यहां लिखा है मैंने, क्या लिखा है? T2 माइनस T1 विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यहां लिखा है 4 डिफरेंट इंटीजर फॉर्म्स एंड इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी कैसे लिखूंगा? इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा इसको किस फॉर्म में? d के फॉर्म में। तो पहले लिखूंगा मैं 2d स्क्वायर, फिर लिखूंगा माइनस 2d, फिर लिखूंगा प्लस 3a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया? ये 2d स्क्वायर यहां से आया,
ये जो प्लस 2d था इसको मैंने ट्रांसपोज किया वहां पर, तो ये माइनस 2d यहां से आ गया, ये माइनस 2d यहां से आ गया। फिर 3a² यहां आ गया, फिर ये जो a था इसको वापस ट्रांसपोज किया यहां पर, तो क्या हो गया, माइनस a हो गया, तो वो माइनस a यहां हुआ। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ये। whenever we have a quadratic equation, we can find the value of d. How you can find the value of d? For example, here, how can I find the value of x? The value of x will be minus b plus or minus root of b square minus 4ac upon 2a. This is the value of x. Similarly, here, what will be the value of d? The value of d will be minus b. What is minus b here? This is minus 2. Minus b plus or minus root of b square. This is my b. B square minus 4a. What is a? A is this. Okay, a. What is c? C is this. So it is 3a square minus a. This is c. Whole divided by 2a. 2 into. Okay, so here minus into minus is plus and this 2. So I will write here 2 plus or minus square root of minus 2 the whole square is 4 minus, let me write here 4 into 2 as it is, then 3a square minus a upon 2 into 2. Okay, from here I can take this 4 and this 4 out. Okay, or I can take this common. So when I am taking this common, this will become 1 and this will go away, and I will get what? I will get only this part. 4 I have taken common. So what is square root of 4? Square root of 4 will be 2. इसको बाहर लेके आऊंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं 2 प्लस और माइनस 2, स्क्वायर रूट के अंदर जो बचा वो क्या बचा 1, 1 माइनस 1 माइनस देन 3 2 जा 6, it is 6a square, 6a square, and then minus 2 minus is plus, and 2 into a is 2a, so plus 2a I will get. Okay, 6 minus 6a square plus 2a divided by 2 into 2. So here again I can take 2 common. From where? Here I can take again 2 common, and then what I will get? I will get 1 plus or minus 1 plus or minus this 2 is taken out, so that I will not going to write. 1 minus 6a square plus 2a divided by 2 into 2. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मुझे d की वैल्यू मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी d की वैल्यू? मुझे अब जो d की वैल्यू है वो मिल गई 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 6a स्क्वायर प्लस 2a डिवाइड बाय 2, ये मुझे मिल गई। अब तुझे यहां पर थोड़ा एनालिसिस थिंकिंग करनी है, सोचना है तुझे। क्या सोचेगा? पहला तू पहले क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला है 4 डिफरेंट इंटीजर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग एपी, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू इंटीजर होगी। कैसी होगी? इंक्रीजिंग एपी में होगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी? इंटीजर होगी और इंक्रीजिंग में होगी। तो मैं ए की वैल्यू क्या एज्यूम कर सकता हूं? आई कैन एज्यूम, ओके, आई कैन एज्यूम द वैल्यू ऑफ ए टू बी -1, 0, 1 or 2. This I can assume and check whether I am getting proper answer or not. ओके, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन जो है ना वो है डी की जो वैल्यू है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग एपी लिखा हुआ है। तो इंक्रीजिंग एपी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये लिखा हुआ रहता है। तो मैंने समझो ए की वैल्यू -1 यहां सब्स्टिट्यूट की, समझो मैंने ए की वैल्यू -1 यहां पर सब्स्टिट्यूट की, तो क्या मिलेगा? यहां मुझे मिलेगा 1 - 6 और यहां मुझे मिलेगा -2। व्हाट इज 1 - 6 - 2? ये जो है ये क्या होगा? 1 - 6 - 2 कितना होता है? ये होता है -7। स्क्वायर रूट ऑफ -7 पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, दैट इज रॉन्ग। सो ए की वैल्यू -1
नहीं होगी, ऐसा सोचना है, ठीक है। तो दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क। चलो ठीक है, अभी ए की वैल्यू 0 लेके देखते हैं क्या होता है। जब ए की वैल्यू मैंने 0 ली तो ये वाला जो टर्म है वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 होगा। तो दिस इज काइंड ऑफ करेक्ट। तो समझो डी की वैल्यू मैंने ली 1, यहां प्लस और माइनस है ना, तो माइनस में कंसीडर नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चाहिए मुझे डी की वैल्यू, तो मैं माइनस कंसीडर इसको नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्लस ही कंसीडर करूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये 0, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू में 0 सेलेक्ट कर रहा हूं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आया मेरे पास, 1 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2 डिवाइड बाय 2 विच इज 1। समझ में आया। तो द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ ए इज 0 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, द वैल्यू ऑफ डी इज 1। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 1 है तो व्हाट विल बी योर एपी। तेरा एपी तुझे पता है क्या, क्या तूने सेलेक्ट किया था पहले, ये देख, ये किया था तूने सेलेक्ट एपी को, A plus D1। वेरी गुड, ये किया था तूने, दिस इज योर एपी। ठीक है, तो सेम एपी आपको नीचे लिखना है, यहां लिखना है आपको सेम एपी। ओके, सेम एपी यू विल गोइंग टू राइट and you will going to substitute the values of a and d. What is the value of a? A is 0. What is the value of d? D is 1. तो ये तेरा फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म 0 हो गया, और थर्ड टर्म ये हो गया, एंड फोर्थ टर्म 2 into 1 ये हो गया। So what is your AP? Your AP is -1, 0, 1 and 2. This is your final answer. These are the required numbers. Okay, this is what is your final answer. Hope you have understood this.